Assalamu alaikum viewers. If you want to improve your English language fluently and if you want to learn English language from basic to advanced level, so this video is for you. Keep watching. My dear viewers, today I am going to discuss about very important topics which are very important for you. So keep watching carefully and pay attention. My dear viewers, one thing keep in your mind that if you are going to learn a language, so you must know about language and about its grammar. So today first of all we will discuss about language, that what is language, zuban kya hai. Okay, so let me define. Basically, language is the way of communication with someone is called language. देखिए जी, बुनियादी तौर पर ज़बान किसी के साथ राब्ते का एक तरीका है जिसे ज़बान कहा जाता है. अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ. Let me give you few examples of language as a communication. For example, think about when you talk to your friends, give presentations, write emails, or even use sign language to communicate with those who are deaf. मिसाल के तौर पर जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, ईमेल लिखते हैं, यहाँ तक कि बहरे लोगों से बातचीत के लिए इशारों की ज़बान का इस्तेमाल करना भी लैंग्वेज कहलाता है. I hope you are getting my points. So now we will discuss about grammar. What is grammar? Grammar क्या है? Let's see the definition of grammar. Basically, grammar is the set of rules and regulations of any language is called grammar. Grammar किसी भी ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित का मजमुआ है जिसे grammar कहा जाता है. अब हम बात करेंगे इसके क़वाइद व ज़वाबित के बारे में. So there are many rules and regulations in English language. But now we will discuss few rules of English language such as subject-verb agreement, sentence structure, parts of speech and tenses. We will discuss these rules and regulations one by one. So first of all I am going to discuss about subject-verb agreement जिसको हम उर्दू में कहते हैं मौजूई फ़ेल मुआहिदा. So subject-verb agreement refers to the matching of the subject of a sentence with the appropriate form of the verb. What does it mean? In simple terms, it means that a singular subject should be paired with a singular verb and a plural subject should be paired with a plural form of verb. सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक वाहिद मजमून यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को वाहिद फेल यानी सिंगुलर वर्ब के साथ जुड़ना चाहिए और एक जमा मजमून को जमा फेल के साथ जुड़ना चाहिए. Let's see the example. For example, we have a sentence she cooks food. वो खाना पकाती है. In this sentence, she is our subject which is singular subject and cooks is our verb which is singular form of verb. So, it turned out that according to the subject verb agreement rule, in this sentence singular subject she is paired and matching with the singular form of verb cooks. Let's see in Urdu. देखिए जी, इससे मालूम हुआ कि इस जुमले में वाहिद मजमून यानी सिंगुलर सब्जेक्ट शी को वाहिद फेल यानी सिंगुलर वर्ब कुक्स के साथ जोड़ा गया है which is grammatically correct. Now we will discuss about the second rule of grammar which is sentence structure, जुमले की साख्त. So sentence structure refers to the way that how words are organized to make a complete and meaningful sentence. मतलब जुमले की साख्त से मुराद वो तरीका है जिस तरह अल्फाज को जुमले में मानी देने के लिए तरतीब दिया जाता है. Let's see. In English, a basic sentence structure typically follows a subject, verb, object pattern. For example, we have a sentence, she eats apple. वो सेब खाती है. In this sentence, she is our subject, eats is our verb, and apple is our object. So, this is our sentence structure which is grammatically correct and gives complete sense and clear meaning. My dear viewers, we have basically three types of sentence structure such as simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Now we will discuss these types of sentence structure one by one. First of all, I am going to discuss about simple sentence structure.
सादा जुमले की साख. A simple sentence consists of just one independent clause. यानी एक सादा जुमला सिर्फ एक आज़ाद जुमले के हिस्से पर मुश्तमिल होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. वी लाइक पिज़्ज़ा. हमें पिज़्ज़ा पसंद है. दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब ये जुमला एक मुकम्मल सोच का इजहार करता है और एक आज़ाद जुमले के हिस्से पर मुश्तमिल है. वी लाइक पिज़्ज़ा. दिस इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. Now we are going to discuss about the second type of sentence structure, which is compound sentence. मुरक्कब जुमला. It is when you join two thoughts into one sentence using words like and, but, so. These words can also called coordinating conjunctions. Let's write a compound sentence. How can we write two thoughts in one sentence using coordinating conjunctions? आइए एक कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं कि हम एक जुमले में दो ख़यालात को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से कैसे लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड बट आई आल्सो नीड टू सेव मनी. मैं दुनिया का सफ़र करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पैसे बचाने की भी ज़रूरत है. इन दिस सेंटेंस वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट. I hope you understand about compound sentence. Now let's come to discuss the complex sentence, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पेचीदा जुमला. Basically, complex sentence contains one independent clause and at least one dependent clause. बुनियादी तौर पर complex sentence में एक independent और कम से कम एक dependent clause होती है. Let's take a sentence. For example, I studied hard because I wanted to get a good grade. See, in this sentence has two parts, independent clause and dependent clause. The independent clause is I studied hard, which can stand alone as a complete sentence, and the dependent clause is because I wanted to get a good grade, which cannot stand alone and relies on the independent clause for its meaning. So I hope these examples help you understand complex sentences. Now, the third rule of English language is the parts of speech, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इज्ज़ाए कलाम. So, parts of speech are different kinds of words that show how words work in sentences. In simple words, parts of speech are those words which we used in our daily gossiping and in our daily writing, such as noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection and determiner. Parts of speech यानी इज्ज़ाए कलाम वो अल्फाज होते हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की बोलचाल और तहरीर में इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर इसम, इसमें ज़मीर, फ़ेल, मुतल्लिका फ़ेल वग़ैरह. I hope you understand. Now we will discuss the fifth rule of English language, which is tense, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़माना. So let's see what are tenses. My dear viewers, tenses are form of verbs that show the time of an action or event. Viewers, tenses जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़माना, तो ये फ़ेल की शक्लें हैं जो किसी अमल या वाक़या का वक़्त ज़ाहिर करती हैं. And they help us to understand when something happened, when something is happening and when something will happen. और ये टेंसेस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कब कुछ हुआ, कब कुछ हो रहा है या कब कुछ होगा. लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, वी हैव थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल. सो वी विल मेक थ्री सेंटेंसेस फ्रॉम दीज थ्री टेंसेस. आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ. विच टेंस इज दिस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई स्टडीड, मैंने मुताला किया. दिस इज़ पास्ट टेंस. एंड द थर्ड सेंटेंस इज आई विल स्टडी, मैं मुताला करूँगा, विच इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आई थिंक these are enough for today. For further explanation, I will make videos on every topic, inshallah. So, my dear viewers, till here, if you have any question and any confusion in any topic, so you can ask from me in comment section. Inshallah, I will give answers of your questions. Thanks for watching.